Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and आज हम बहुत important topic पढ़ने जा रहे हैं. A very important topic that we are going to cover today, and that is indemnity from liability. Now ये topic आपका paper 2 GS paper 2 के लिए important है. Specifically in mains GS paper 2 international relations. This topic is going to target the international relations. Okay. So what is this topic all about? What kind of indemnity are the companies like Pfizer and Moderna they are trying to get from the vaccine supply to India, and what is the case? What will happen if they seek indemnity from any kind of liability from the side effects of the vaccines on the Indians? We are going to study that in detail. Okay. So before we move forward, आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो क्लास का PDF है वो अपलोड हो जाता है. सिंप्लीफाइंग UPSC विद ईज नाम है टेलीग्राम चैनल का. You can directly download Telegram app, then go on to the search option, type simplifying UPSC with ease, and you'll get to the channel. Okay. So let's start. Now you all know that vaccination drives have been started in India. अभी 18 दिल्ली में स्पेसिफिकली 18 से 45 इयर्स के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन अभी ओपन नहीं है, बट यस 45 प्लस के लिए अभी ओपन हो गया है. स्लॉट्स बुक करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, बट जितना जल्दी हो सके आप अपने पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए स्लॉट्स बुक करें और उन्हें वैक्सीनेशन लगवाएं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. Here you can see that the vaccine manufacturers like Pfizer are demanding indemnity or protection or liability waiver for the supply of vaccines. इंडिया को सप्लाई तो करेंगे वैक्सीन्स, बट बोल रहे हैं कि किसी तरीके की जिम्मेवारी नहीं लेंगे. लाइबिलिटी वेवर, वेवर मीन्स कैंसिल ऑफ. किसी तरीके की लाइबिलिटी हम अपने सर पे नहीं लेंगे. वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट दैट इज गोइंग टू हैपन विद द वैक्सीनेशन. सो हु विल बी लायबल इन केस ऑफ कंप्लेंट ऑफ साइड इफेक्ट्स इज द क्वेश्चन. अगर मॉडर्ना या फाइजर जैसी कंपनीज बोलेंगी कि भैया हमको तो कोई लाइबिलिटी नहीं चाहिए, तुमको कोई साइड इफेक्ट होता है जिम्मेदारी अपनी नहीं होगी, तो इस केस में अगर साइड इफेक्ट होता है तो हम किसको जाके कहेंगे, कंप्लेंट किसके नाम पर करेंगे, किसकी जिम्मेदारी होगी? ऐसे थोड़ी हो सकता है. सो मैन्युफैक्चरर्स आर डिमांडिंग दैट दे शुड नॉट बी हेल्ड लायबल. मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं हमारी कंडीशन यही है, हम आपको वैक्सीन देंगे, इंडिया को वैक्सीन देंगे, बट भाई हम लायबल नहीं होने चाहिए. दिस इज अ प्री कंडीशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन इंडिया. द मैन्युफैक्चरर्स themselves are saying we are not going to be liable in any case if in case there are side effects, right? So that is the precondition before supplying vaccines to India. But the Indians, the government is also saying that then who will be liable, who we should be posting our complaints to. So the present status in India is that the government has included a liability clause in the contract with manufacturers, right? We are trying to take vaccines from Moderna and Pfizer, and we are trying to include the clause of liability in the contract, that if in case there are any side effects, then the manufacturers should be responsible. They have to cope up with it. They have to give the compensation, and they have to look into it. So as per the contract, producers will be liable to compensate the people in all claims that arise due to the vaccine. Vaccine से कोई भी, see, if you have made something, you are delivering it, so you should take the responsibility. You should stand for it, right? If there is any side effect or any kind of loopholes in the product that you have delivered, you have to take the full responsibility. ठीक है, you have to give the compensation, but the government is including the same clause in the contract, but they are not trying to take this responsibility. Even section 124 of Indian Contract Act of 1872 defines the contract of indemnity as a contract by which one party guarantees to save the other person from loss caused to him by action of guarantor himself or by the action of any other person. This is the act of contention, the act which is very contentious right now over here in this case. Section 124 Indian Contract Act 1872 contract of indemnity को define करता है. Now before we delve deeper or dig deeper into this indemnity, contract of indemnity, we should know what is the meaning of the term indemnity. आगे बढ़ने से पहले ना हमको पता होना चाहिए इंडेमनिटी का मीनिंग क्या होता है. इंडेमनिटी माने सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और अदर फाइनेंशियल बर्डन. दैट इज इंडेमनिटी. सिक्योरिटी अगेंस्ट और एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर वंस एक्शंस. दैट इज इंडेमनिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी गारंटीज टू सेव द अदर पर्सन. ठीक है, अब
एक पार्टी गारंटी लेती है कि अगर कुछ झोल होता है, कोई लॉस होता है तो हम आपको बचाएंगे, ठीक है, अगर कोई लॉस आपको होता है तो हम आपको गारंटी देंगे, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मेरे एक्शंस की वजह से, दिस इज द गारंटर, ये हो गया गारंटर, अगर मेरे एक्शंस की वजह से आपको कोई लॉस होता है तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं आपको कॉम्पनसेट करूंगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, सो व्हाट आर द अदर कंट्रीज डूइंग? बिफोर वी स्टडी दैट, हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। See, Unacademy has launched Unacademy Civil Services Championship. This is going to be launched on 13th June from 10 to 12 PM. सुबह 10 से 12 बजे का ये बिगेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम होने वाला है। ये फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो, लाइव टेस्ट होगा ना। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टॉप 50 रैंक में रैंक लेकर आते हो ना, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर मेंटोर्स से गाइडेंस मिलने वाली है। और मेंटोर्स कौन होंगे? जिन्होंने खुद ये एग्जाम क्लियर किया है, अभिषेक सराफ सर, शताब्दी मजूमदार मैम, दुर्गा शक्ति नागपाल मैम, ये सभी लोग जिन्होंने खुद इस एग्जाम को क्लियर किया है और जिनका सालों का एक्सपीरियंस रहा है, वो आपको डायरेक्ट गाइडेंस देने वाले हैं, मेंटोरशिप देने वाले हैं। प्लस यू ऑल्सो स्टैंड अ चांस टू विन मैकबुक, आईपैड, आईफोन, एयरपॉड्स। यू कैन विन scholarships and prizes worth ₹3 crore. So here's your chance to receive this mentorship and also to win exciting prizes from a pool of ₹3 crore. Top 50 rankers को सारे बेनिफिट्स और सारे प्रिविलेजेस मिलने वाले हैं। तो इस टेस्ट को लाइव जरूर अटेम्प्ट करना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। So now let us understand, countries like Canada, Singapore, UK, US, European Union, they have assumed a considerable amount of liability as opposed to the manufacturers. जितनी भी कंट्रीज है ना, कनाडा, सिंगापुर, उन्होंने लाइबिलिटी ली है। हम मैन्युफैक्चरर्स को देखिए, वो लाइबिलिटी नहीं लेने को तैयार है, कंट्रीज ले रही हैं। In Feb, USA also invoked the Public Readiness and Emergency Preparedness Act also. This 2005 law empowers the Health and Human Service Secretary to provide legal protection to companies making or distributing critical medical supplies. तो देखो, कंपनीज को प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे रही है, राइट? ये होता है आपका इंडेमनिटी। यहाँ पर आप देखोगे, ये मान लीजिए गवर्नमेंट है, ये हो गई कंपनी जो आपको वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे अगर आपको कोई लॉस होता है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ यूएस भी पब्लिक रेडिनेस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक्ट के तहत प्रोवाइड कर रही है लीगल प्रोटेक्शन कंपनीज को, ठीक है, जो कि क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज, वैक्सीन या किसी तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और ये इम्यूनिटी कब तक लास्ट करेगी, यानी कि ये प्रोटेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा इन कंपनीज को कब तक मिलती रहेगी? 2024 तक इस एक्ट के तहत यूएस में। Then there is the countermeasures injury compensation program is also there. This is important. It has also been created under this act where a dedicated compensation amount is enough to treat and indemnify the loss of the aggrieved. Okay, so here the government is backing, right? Same thing is happening over here. यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं कि भैया हमको इंडेमनिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए इंडियन गवर्नमेंट से, कि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होती, अगर कोई लॉस होता है तो गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसे ही साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने भी अपना खुद का $250 मिलियन का कॉम्पनसेशन फंड लॉन्च किया अपने सिटीजन्स के लिए, वेविंग ऑफ, दैट इज कैंसिलिंग द लायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। अगर कोई लॉस होता है, कोई साइड इफेक्ट या कोई दिक्कत होती है लोगों को, तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इस कॉम्पनसेशन फंड में से उनको कॉम्पनसेशन देगी, कंपनी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ठीक है। Now here, because of this acute vaccine crisis which is going on in India, अपनी कंट्री में जो acute vaccine crisis चल रहा है ना, तो ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया ना इंडेमनिटी यानी कि प्रोटेक्शन दे देगी इन फॉरेन वैक्सीन मेकर्स को, जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना हो गए, ताकि जल्दी से जल्दी कोविड वैक्सीन भारत में आ सके। अब सीरम इंस्टीट्यूट है ना, वो अभी लेटेस्ट फार्मा कंपनी बनी है जिसने इंडेमनिटी मांग की है, इंडेमनिटी यानी कि प्रोटेक्शन की मांग की है, ठीक है। लेटेस्ट कंपनी विच हैज asked for indemnity or you can say for protection from the liability is Serum Institute, stating that all vaccine manufacturers, whether it is Indian or foreign, should be protected against legal cases for any severe side effects, because how the body reacts with the vaccine is different. हर बॉडी का रिएक्शन वैक्सीन के साथ बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो हमको भी यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए। Now the question is, what is this indemnity clause? Indemnity, I told you initially, it is protection from any legal case or legal issue. Okay, protection, that means security against a loss or financial stress. किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस होता है, किसी तरीके का और कोई लॉस होता है, उस केस में इंडेमनिटी मिलेगी यानी कि प्रोटेक्शन मिलेगी। इन लीगल टर्म्स व्हाट इज इंडेमनिटी? अब लीगल टर्म्स में इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन of one party to protect or to compensate another party due to acts of the former. For example, this is a human, ठीक है, ये हो गया एक
जनता, सिटीजन कह लो, ठीक है। ये हो गई कंपनी मॉडर्ना और फाइजर, ये हो गई गवर्नमेंट, ठीक है। सो हियर इफ कंपनी इज आस्किंग गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंडेमनिटी, ठीक है, ये मांग रहे हम आपको वैक्सीन देंगे, वी आर गोइंग टू गिव यू वैक्सीन, इन दिस केस इफ देर इज एनी साइड इफेक्ट देन गवर्नमेंट हैज टू गिव अस प्रोटेक्शन, इंडेमनिटी, राइट। और जो भी कॉम्पनसेशन होगा वो इंसान को आप देना, बाकी हमको प्रोटेक्शन दो, ठीक है। द क्लॉज इज कॉमनली यूज्ड इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने देखा होगा जब आपके मम्मी पापा इंश्योरेंस करवाते हैं उसे इंडेमनिटी वर्ड जरूर आता है, कार इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, यू विल फाइंड अ वर्ड कॉल्ड इंडेमनिटी इन दैट। इवन इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट यू मस्ट हैव स्टडीड द वर्ड इंडेमनिटी। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपने इंडेमनिटी वर्ड जरूर पढ़ा होगा। सो इन केस ऑफ इंडिया इफ गवर्नमेंट गिव्स एन indemnity to foreign vaccine makers to give their vaccine or supply their vaccine in the country, then the government and not the vaccine maker would be liable to compensate any citizen who claims to have side effects after taking the vaccine. तो अगर हम indemnity दे देती है ना इंडियन गवर्नमेंट वैक्सीन मेकर्स को, तो अगर कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई केस करता है, तो वैक्सीन मेकर नहीं गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी सिटीजन को, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने तो इसको प्रोटेक्शन दे ही दी ना वैक्सीन मेकर को कि तुम तक हम बात नहीं आने देंगे, तुम पर किसी तरीके की गाज नहीं गिरने देंगे, हम तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर निभाने वाले हैं, ठीक है। सो बिफोर मूविंग अहेड इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट. Tomorrow is Sunday and Unacademy is launching Unacademy Combat, which is India's biggest scholarship test, weekly scholarship test, which is conducted on every Sunday at 11 AM. कल 11 बजे आपका Prelims का एक scholarship test होने वाला है UPSC Aspirants के लिए, जिसका नाम है Unacademy Combat. You have to do one thing, you have to download the Unacademy app, learning app, then click on the link given below in the description box and then enroll. If they ask for a code, then you can type Arpita10. आप अर्पिता 10 टाइप कर सकते हो और आप इस कॉम्बैट को ले सकते हो. रैंक 1 to 3 will get 1 year UPSC CSE GS Plus subscription. Rank 4 to 10 will get 75% scholarship. Rank 11 to 50 will get 50% scholarship and 51 to 500 are going to get 25% scholarship. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. The link is given below in the description box. Now let us understand what are bridging trials. Bridging trials क्या होते हैं? ये localized clinical trials होते हैं जो डेटा जनरेट करते हैं related to the impact. Impact मतलब क्या हो जाता है? असर. ठीक है, impact means असर of foreign medicines or vaccines on indigenous population before they are rolled out for public. जनता के लिए इस वैक्सीन को निकालने से पहले अभी इसके ना localized clinical trials होंगे, small trials will take place to understand the impact or the effect of this vaccine on the body of the indigenous people or indigenous population. Only then, when they are safe, only then they will be rolled out for all of us. So these trials are important in knowing the efficacy and potential side effects related to the medicine or vaccine. Do not think that just because Moderna and Pfizer are trying to agree to send vaccines to India, then if they are going to roll out them automatically in India, in all of the country or all of the places in India. No, first they are going to undergo localized clinical trials to understand the side effects these vaccines might have on the people and to understand the effects, how much antibodies are they going to generate. Besides clearance on indemnity clause, foreign vaccine makers including Pfizer and Moderna had sought relaxation on requirement for post approval bridging trial for its vaccine. अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया. यहाँ पर Moderna, Pfizer ये तो बोल रहे हैं कि हमें इंडेमनिटी क्लॉज चाहिए, बट वो ये भी बोल रहे हैं कि जो पोस्ट अप्रूवल होता है ना वैक्सीन का, पूरी तरीके से रोल आउट होने से पहले इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे हमें उसमें भी रिलैक्सेशन चाहिए, हमें उसको भी नहीं करना है, सीधा सीधा रोल आउट करो. तो अभी गवर्नमेंट इज गोइंग टू थिंक अबाउट इट. दे आर गोइंग टू चेयर अ मीटिंग टू टॉक अबाउट द डिमांड्स ऑफ Moderna and Pfizer and then only we are going to do something or we are going to approve them. Now the question is, are there any exceptions to indemnification? ठीक है, there are number of common exceptions to protection. मतलब कौन कौन से केसेस है जिसमें हम प्रोटेक्शन ना भी दें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if they are not complying with our obligations in the agreement, if they are not complying with our points of our government in the agreement, or there is any case of negligence or gross negligence, in that case we are not going to give indemnification. Okay, उस केस में हम, or there are improper use of products,
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये था आपका इंडेमनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया तो मुझे जरूर बताइएगा। इफ यू हैव एनी डाउट ना रिलेटेड टू दिस टॉपिक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर डाउट्स। ओके, so on this note we are wrapping up the session. Thank you everyone. This topic is very important also from the perspective of ethics. Okay, so make sure that you study this topic again and revise it very keenly.